Close your eyes and think about that one thing that you always want to do or achieve. And that's your dream. And today I'm going to tell you 4 easy steps that will take you closer to your goals. And I'm sure कि ये steps आपने ना पहले कभी सुने होंगे ना पढ़े होंगे. So, here we go. Hey guys, I am Megha and I welcome you all to our channel, the Indian Philomath. So, before moving further, सबसे पहले हम जानते हैं कि dreams होते क्या हैं? Dreams वो जो हमें सोते टाइम पे आते हैं. नहीं, ड्रीम्स तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे. एंड बेसिकली ड्रीम एक ऐसी इमेजिनेटिव पिक्चर होती है जो हमारे माइंड में चल रही होती है, जिसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं. वो हमें एनर्जी देती है, हमें एंथुजियास्टिक बनाती है एंड हेल्प करती है हमारी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने में. You might have heard people talking about dreams and goals, and सबकी तरह हमें भी लगता है कि दोनों सेम होते हैं. बट नो, ड्रीम्स एंड गोल के बीच में एक डिफरेंस होता है, और वो है ड्रीम एक विश के जैसा होता है जो स्मोक की तरह टाइम के साथ में उड़ जाता है. पर जब ड्रीम को मिल जाती है एक राइट प्लानिंग अलॉन्ग विद अ डेडलाइन, तो वो बन जाता है एक गोल. So in short, a goal is just a dream with a right plan and deadline. So it's very easy guys. Once you make sure what your goals are, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 4 steps को follow करना है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. And trust me, most people don't know this and many people don't do this. And यही एक difference बन जाता है between getting what you want and failing. But I know that you are going to follow these steps. And I also know this, that our Indian Philomath family is very smart. But to reach our goals, our dreams should also be smart. So let's know what smart dreams are. S stands for specific. If you have a dream that, okay, I want to be happy, then what makes you happy? Specify it. Does losing weight makes you happy? Specify it completely. M stands for measurable. Just by thinking that I want to lose weight and that will make me happy won't help you. You have to plan it that how much weight you have to lose. 1 kgs, 2 kgs, or how much. It should be measured in numbers or it should be countable. A stands for achievable. जस्ट लाइक इट साउंड्स, एक ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि आप प्रैक्टिकली इसको अचीव कर सकते हो. जैसे ही सिर्फ ये सोच लेना दैट आई कैन लूज 10 kgs वेट अ वीक, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो हैव दोज ड्रीम्स दैट आर practically achievable. R stands for reliable. It's very important to believe your dreams because if you don't, trust me, it won't happen. And last, T stands for time bound. As we've already discussed, that a dream without a deadline is just a wish and it's waste. So give your dreams a deadline and make them your goals. So after we have our smart goals, now it's time to segregate them into 3 categories. And ये इसीलिए important है because इससे हमें एक clarity मिलती है हमारे path में to achieve any goal or any dream. So the 3 categories of achieving every goal is number 1, short term goals. इसमें कुछ ऐसे goals आते हैं जो आप 2 से 6 महीने के अंदर achieve करना चाहते हो. And these could be anything like gifting something to yourself or reading 4 to 5 books in a month or anything. But ये इसीलिए important है क्योंकि इससे हमें एक sense of fulfillment मिलती है, एक sense of achievement मिलती है and it makes us happy. Number 2, mid-term goals. गोल्स जो कि हम नेक्स्ट 1 to 2 years के अंदर फुलफिल करना चाहते हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं. एंड इट कुड बी अ ड्रीम और अ गोल दैट यू वांट टू टॉप इन योर यूनिवर्सिटी और लर्निंग अ सॉर्ट ऑफ स्किल. All these kind of goals come into this category and ये इसीलिए important है because it helps us keep going and gives us a what next. Number 3, long-term goals. Goals that you want to fulfill in or after 5 years falls into this category. So goals like having your dream job or your dream house or your dream car fall under this category, and it's important to have long-term goals because it never allows us to quit in the process of achieving our goals.
Now, after you know what is a dream and a goal, how to have smart goals, and how to categorize them into three categories, now it's a time to know those four steps which we were talking about that are easy and short, and they are the process behind achieving every goal. नंबर वन, सी इट और विजुलाइज इट। ड्रीम्स को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ये हमें हेल्प करते हैं उनको अचीव करने में। एंड हेयर इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस वर्क्स इन डे टू डे लाइफ। व्हाट हैपन्स, जब भी चैलेंजेस आते हैं हम हार मान जाते हैं, अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं। पर ड्रीम्स को देखते रहने एंड विजुलाइज करने के लिए आप कुछ टूल्स की हेल्प ले सकते हो। जस्ट लाइक मैंने अपने लिए इस ड्रीम डायरी को बनाया था, एंड इसमें मैंने अपने सारे ड्रीम्स की इमेजेस को स्टिक कर दिया है, एंड ये मुझे मोटिवेट करते हैं हर समय उनको अचीव करने में। एंड नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ अ विजन बोर्ड जस्ट लाइक दिस, जिसको आप अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। एंड आप जब भी सुबह उठेंगे आपको अपने गोल्स सामने दिखेंगे, एंड दे विल हेल्प यू टू अचीव दैम। Number 2, speak about your dreams. You just need to speak about it. It doesn't mean कि आपको किसी और को जाके बताना है. No, just speak about your dreams जब भी आप अकेले में हो, because it also helps a lot in achieving them. Number 3, review them. बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स को रिव्यू करना बार बार इन अ वीक और इन अ मंथ, बिकॉज ये हमें एक रियलिटी चेक देते हैं। एंड नंबर 4, वर्क ऑन इट। एज एक्शंस आर द की। अगर हम ये स्टेप नहीं करते तो ऊपर के तीनों स्टेप सब वेस्ट हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शंस, टेक अ लॉट ऑफ एक्शंस एंड फुलफिल योर एवरी गोल। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोसेस इज कि इस प्रोसेस का हर एक स्टेप आपको हेल्प करता है अपने ड्रीम को 25% अचीव होने में। जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेप, as you complete you will get 25% of your dream done, and similarly all the 4 steps will help you to complete your every goal completely 100%. Then why don't people get their dreams done? Because maximum times and maximum लोग सिर्फ 4th step फॉलो करते हैं, दैट इज दे जस्ट वर्क, एंड इसीलिए उनका गोल बस 25% अचीव हो पाता है एंड 75% रह जाता है। बट यू मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द 4 steps. So I think that you like the whole process of fulfilling every goal, and at last I just want to say that do have a dream, as it really gives a purpose to our life and it helps us हमें किसी भी negative emotion से बाहर निकालने में। and just like it happened अभी recent in pandemic से पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे plans थे, but everything got just failed. बट जब हमारे पास में एक गोल होता है, इट हेल्प्स अस गिविंग अस अ डायरेक्शन and makes our life purposeful. So have a dream, make it a goal and achieve it by these simple steps. If you like the steps and the video, do give it a thumbs up and also tell us about it in the comments below. If you are new to our channel, do subscribe our channel and keep sharing it with your friends.